Then, Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the Dental Talk. We have a very special guest. I've been after Dr. Saiqa Ahmed for a while now कि हमें interview देने के लिए आए. Dr. Saiqa completed her BDS from Pakistan. Then she did her DDS from NYU. And introduction तो मैं बहुत लंबा दे सकता हूँ, but to cut it short, she is the CEO of Dental Professionals, which is आई एम श्योर जो भी डेंटिस्ट होगा उसको डेंटल प्रोफेशनल्स का तो ज़रूर पता होगा बिकॉज इट इज़ टेक्निकली द नंबर वन डेंटल प्रैक्टिस ऑफ लाहौर राइट नाउ एंड आई वोंट इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन इफ आई से ऑफ पाकिस्तान बिकॉज लिबर्टी चौक में मेन पे नज़र आ रही होती है सबको सो एवरी वन नोज अबाउट डेंटल प्रोफेशनल्स थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस इट मीन्स सो मच टू मी आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी Thank you. Thank you, Dr. Pracha, for following me, for making me make this commitment with you. And finally, I'm here with you. So I'm all yours. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, with your permission, should we start? Yes, please. All right. Ma'am, थोड़ा पीछे Yes, please. थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में. Tell us a bit about yourself. Tell us कि आपने BDS क्यों चूज़ किया, आपने BDS कैसे चूज़ किया और फिर वो अंडर ग्रेजुएट ईयर्स कैसे थे ड्यूरिंग डेंटिस्ट्री. Okay. So I have to recall, Okay. कैसे pick किया? Honestly speaking, it was coincident that I have become a dentist. I wanted to be a doctor, honestly speaking. ठीक है, मगर बस डेंटिस्ट्री में एडमिशन हो गया तो तब सोचा कि चले डेंटिस्ट बन जाते हैं. So this is how I became, I came into this profession and I did my BDS from D. Montmorency College of Dentistry. At that time, that was the only dental school in Lahore. So, but I'm happy that Allah decided this for me, and this was the right profession, I think, for me also. Yeah. All right, perfect, मैम. मैम आपने BDS ख़त्म कर लिया, BDS ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने चूज़ किया कि आप DDS करें. अब बहुत पहले की बात है, अब तो मतलब बहुत पहले की बात है ऑब्वियसली. उस ज़माने में DDS के लिए जाना, गोइंग टू अमेरिका, गोइंग फॉर एन एडवांस स्टैंडिंग प्रोग्राम, हाउ डिड यू गो अबाउट दैट प्रोसेस एंड व्हाई डिड यू चूज़ टू गो टू अमेरिका? अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं डॉक्टर प्राचा कि I did not go for DDS. I actually got married and I went to States. And once I was there, and I always, when I got there, I thought कि यहाँ तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे बहुत I felt really bad. So I said, no, I'm going to equalize my degree here also. So I talked to my husband and I said, okay, I want to study. And in the beginning, he was not much in the favor. And he said, okay, you have done enough, So, let's start a family life and all that. But wo jo कीड़ा था ना, वो मेरे ज़हन में हमेशा से था. So I, mashallah, had 3 kids. And then one of my classmates came to America. She's in California at the moment. She's the one, her name is Shahnaz Kamal. She's the one actually who pushed me, कि nahi, you are a good student. I think you should pursue your career here also. So with her help, and my determination, जो मैं हमेशा से चाहती थी, I said, okay, what do I have to do then? So I got all the information. Shahnaz sent me the old papers for national boards. So I started studying and I took my national board part 1. And when the result came, I put that result card in front of my husband when he came for the dinner, that particular day. So I said, what is it? Manka, this is my result. Mera pass ho gaya. And I in that exam. And he was so shocked. He said, I don't know when you studied, how you did it, how you managed 3 kids and your studies and everything. But this tells me that it will not be, justified that if I don't allow you to go for more studies and all that. So that was the turning point, So then I just got enrolled myself at NYU in 1993. And wow. This is how it started. And then I finished it in 1996. Yeah. So this is the degree, I got, as you know, it's DDS, and at that time it was
valid for 14 states. The whole northeast regional side was covered. So I although I practiced only in New Jersey, but I had the license for New York and Pennsylvania also. But because I lived in New Jersey, so I just practiced in New Jersey for say 5-6 years before I moved to Pakistan. ऑलराइट मैम, आपने डीडीएस कर लिया. अब आई एम श्योर बहुत एक मुश्किल प्रोसेस होता है डीडीएस का, एंड देन गेटिंग एडमिशन एंड देन स्टडिंग अगेन आफ्टर सो लॉन्ग आफ्टर ग्रेजुएटिंग. फिर आपने डीडीएस कर लिया, यू प्रैक्टिस्ड ओवर देयर फॉर अ वाइल एंड देन यू केम बैक. यूजली बहुत रेयर होता है दैट यू एंड अप कमिंग बैक और पीपल एंड अप कमिंग बैक. एक तो हाउ वाज दैट ट्रांजिशन व्हेन यू मूव्ड बैक टू पाकिस्तान? तो वो ट्रांजिशन आपके लिए कैसा था? वाज इट इजी? आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. एंड देन यहाँ आपने कैसे वो सोचा कि अब मैंने आगे क्या करना है? वो आपने क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? अच्छा, जैसे मैंने आपको भी बताया कि माई गोइंग टू माई स्टार्टिंग डीडीएस इन स्टेट्स was because I got married. I went there, and this is how after I had my family, I started going to school there. But ये हुआ कि in 1993 when I started it, I started it to equalize कि मैं अपनी डिग्री को बराबर कर लूँ, DDS हो जाऊँ. And I was a very committed mother. I honestly telling you, I was at that time not studying to pursue my career. Honestly speaking, I said, I will see. I did not want my kids to miss me. I was very focused for them. But during this time when I was studying there, I lost my husband, in a tragic heart attack episode. Oh, I'm so sorry. And then I continued my studies. First I started it with something else in my mind, but then it became very important for me to continue it and to become a dentist there, so I can be a provider also for my family. So then I finished DDS. It was very, very difficult. I'm My sure. third year was the very hard. That is the hardest year. जिसमें आपको बहुत सारी requirements पूरी करनी होती हैं, subject studies, everything. But Alhamdulillah, I don't know, Allah gave me that kind of himmat, I would say. Allah has been very, very kind to me. So I was able to graduate, and then I, started working there. Yes. This is how I started my career over there. But then it became my passion also. Because I learned dentistry while I was there. You know, I will tell you what was the difference also when I studied here and studied at NYU. But after I graduated from NYU, I was so confident, myself, that I wanted to open up my own practice. But people told me, "Okay, pehle thoda sa experience kar lo, you should work somewhere, and then you can open up your own practice, whenever you want to." So then I started working, at a dental practice over there, and there it goes. This is how I started. Okay, that's perfect. But ma'am, when did you decide to move back to Pakistan? And then, after like 5 years, 5 years of my work over there, now I was about to open up. I had at that point, I had a choice, should I go for my own dental practice or should I move to Pakistan? That idea came into my mind because when I used to come back home, after my working hours, I used to see my kids, and I see them, they are lost, although my mother came, and she used to love them and all that. But आपको पता है कि parents अपने तरीके से चाह रहे होते हैं बच्चों को. तो मुझे लगा कि I will make money, I will be very busy in my career, but मेरे बच्चे मिस हो जाएंगे, मेरे बच्चों के साथ मेरा जो एक बॉन्ड है वो नहीं बन पाएगा. So then I started thinking, what if I go back to Pakistan? I never worked in Pakistan. मैं अपना हाउस जॉब करने के बाद मैं शादी हो गई और मैं अमेरिका चली गई थी. So I said, I don't have an experience, I should work there also. My kids will know what their roots are, they will learn something. Just जैसे भी सोसाइटी है, मगर अपना एक माशरा है,
I have lived there. I have studied there also. So I may spend more time with them too. And I can put up a nice practice for my countrymen also. So why not? And the more I thought about it, I was more convinced that I should do it. And then after a year, the whole process, of how I'm going to start it here, what I'm going to do. Then I just discussed it with my family. And first, their reaction was, they were like shocked, why you became a dentist, and people die to go to America and pursue their career there, and you are going to you want to go back. And I said that everybody has their own reasons to do what they want to do in life. I want to stay close to my kids. I want to pursue my career also. So I don't think it's a bad idea, but I will definitely, inshallah, I said, okay, I will go to Pakistan. What if I won't get settled there, and I can always come back here. So this is how I made this move. Wow, ma'am. So once we came here, That is a very so brave decision and a very inspirational story. मैं तो सोच भी नहीं सकता था. I was not expecting such an मैं बहुत इसमें मुझे goosebumps हो रहे हैं. But no, ma'am, thank you so much for sharing this story with us. And I am sure क्योंकि हमारे ना आफ्टर दैट पैनल डिस्कशन बहुत सारे लोगों ने, बहुत फीमेल्स ने हम मैसेज किया कि ब्रिंग डॉक्टर साइको ऑन द शो, क्योंकि हमारी फॉलोइंग बड़े डेंटिस्ट तो नहीं है जो सीनियर डेंटिस्ट है, हमारी फॉलोइंग है जो सुनते हैं पॉडकास्ट, वो यंग डेंटल स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश ग्रेड्स हैं, पीजी ट्रेनी सुनते हैं हमारे शोज़ को. तो बहुत लोगों ने कहा डॉक्टर साइका को लाएं. तो दैट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड आई एम श्योर पीपल विल लर्न अ लॉट. मैम, अच्छा फिर आप वापस जब आ गई तो आपने यहाँ आके प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे, एक पूरी प्राइवेट प्रैक्टिस लिबर्टी के बीच में कैसे शुरू की, वो प्रोसेस आप जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आपने किसी के साथ, लोगों के साथ शुरू की, दोस्तों के साथ, किस तरह वो एक प्रोसेस और एक्सप्लेन. उसमें यूं हुआ डॉक्टर प्राचा कि when I came here, then next summer I just took my kids back to States because my whole in-laws, their chacha, dada, halvas, they're all there, So I wanted them to stay connected to the family also. So I went in summer, and then I saw two of my colleagues, my class fellows, जो कि वहाँ पर न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे. So one of them invited me over lunch, and I went there, and he said, "Okay, so how is it going? What do you want? Where are you going to? What are you going to do now?" So I said, "Okay, I'm going to open up my own practice." So he said, "Okay, I want to come back to Pakistan also. So wait, go and just look for a place, and just let me know. Just let me know." And this is we talked over lunch table. That he said, "Okay, we will start our own practice. Don't join anybody." And just look for a place, and then let me know. I will come and I'll see, and then we will start from there. And then he had his partner in the business over there in New York, and he said, if I go to Pakistan, the other doctor would like to go to Pakistan also, because we always talk about it, but we never had that courage to get out of this system. So as you have, you are like an electron who just gotten out of this orbit. So just you just pull us also. And I said, okay. So when I came back after the vacation, I started looking for a place here. I met few people here also. I tried to find out what kind of dental practices are going on in Pakistan, क्या चल रहा है. तो मुझे यही लगा कि नहीं, मुझे हमें अपना ही करना पड़ेगा. Then I like this place where presently my office is. And I told my partner that I have, shortlisted few places, and I would like you to come so that we can finalize it and we start working on it also. So he came, and he liked this place also. And then we asked the third partner also, and he said, yes, he would like to join us too. So three of us, me, Dr. Abid, and Dr. Amjad, we got together, although both of them were there at that time. And then, gradually, pehle Dr. Abid aa gaye, phir Dr. Amjad aa gaye. But by that time, in October 2003, I have already started this practice, And then my two other colleagues, actually one of them आपने शुरू से ही आपकी प्रैक्टिस बड़ी थी, or did you start from a 2 unit or a 3 unit practice? या शुरू से? No, we started from 8 units. We started from 8 units because we were like three of us, and then we we asked for the specialties, because in this office, what I found out in Pakistan,
कि one dentist is doing everything, ठीक है, उसकी वो speciality है या उसकी speciality नहीं है, but he is trying to do somehow everything. And I thought this is not fair with the patient. They are willing to pay you good, and they should get specialized treatment, for them. So three of us, and then Dr. Abid Ashar, he came from Medina also, and he came to visit our office. And he's an oral surgeon. So right away, I offered him the partnership. I said, I would like you to join us. And he said yes to us also. And then an orthodontist who was also in our university, who also studied from NYU too. And he came back to Pakistan also. So he joined us also. So this is how 5 of us, started this practice in year 2003. वाह ओके मैम तो आपने फिर जब टीम बिल्ड करना शुरू की उसमें आपने कैसे मतलब उसका क्या प्रोसेस था आपका कि आप किस तरह पिक एंड चूज करती थी कि ये डेंटिस्ट काम करेगा मैं क्योंकि जब एक नया डेंटिस्ट हम जैसे डेंटिस्ट जब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बनाएंगे तो टीम बड़ी ज़रूरी होती है आप असिस्टेंट से लेके रिसेप्शनिस्ट से लेके आपको एक पूरी बड़ी वेल जेल टीम बनानी पड़ती है जो कि हर चीज़ को देख रही हो उसका क्या प्रोसेस था देखिए बेटे आपकी प्रैक्टिस की जो सक्सेस है ना वो शुरू ही आपके टीम वर्क से होती है. अब जो डेंटिस्ट्री जो है ना इट्स ए होलिस्टिक काइंड ऑफ द प्रोफेशन. इट्स नॉट जस्ट कि पेशेंट अगर एक टूथ के साथ पेन में आया तो हमने सिर्फ उस टूथ को देखना है, उसको ट्रीट करना है एंड दैट्स अबाउट इट. पेशेंट चले जाएगा. नो, you need to see the whole thing, a person and the whole mouth, and then for the success of your practice and your business, it is very very important. Not only the dentist, not only the other doctors who are doing great dentistry, but your team. Team में सबसे पहले कौन आता है? जो आपका रिसेप्शन पे ऑफिसर खड़ा होता है. Never called my receptionist a receptionist. I always call them front desk officer because my patients see them first. मेरे तक तो वो बाद में पहुंचता है, ठीक है ना? They see the front desk girl first, and if they are not happy the way they've been approached, or they've been talked, तो वो वहीं से कई दफा डिसहार्ट होके पेशेंट जा सकता है. So we trained our front desk, we trained our assistants before we started this, and I'm very proud to say that my staff is mashallah very well trained. ठीक है? So it is the requirement if you want to have a successful practice that when your patient walks in, पहले तो उसको एक अच्छा environment मिले, वो ना मिले कि वो कोई पहले डेंटिस्ट से लोग डरते हैं. They are very scared to go to a dentist. ठीक है ना? I wanted my lobby to look like a drawing room, not like in hospital. And it does, ma'am. It is such a beautiful lobby. मेरे अब्बू, my father is a patient of dental professionals, and my father cannot go to any other clinic. वो मेरे से scaling नहीं कराते because he's just obsessed to get his work done at dental professionals. So this is what I thought it should look like, a comfortable place. So they come and they feel relaxed, So उसके बाद front desk पे जब वो बात करें तो they feel welcome there. And when my assistant bring them to my office or my operatory, तो assistant भी उनके साथ इस तरह बातचीत करे कि they feel welcomed. And then when I see them, थोड़ा सा उनका जो एक डर वाला एलिमेंट है वो थोड़ा सा चले कम हो गया हो, and the rest is on me, कि how I talk to them and greet them. And बड़े बड़े मैं पेशेंट देखती हूँ जो बहुत घबराते हैं, डर जाते हैं, and I said कि नहीं, आज हम कुछ नहीं करेंगे, let's talk. किस चीज से fear है आपका? I just focus on that, and then उसको आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वही पेशेंट जो पहले मुंह खोलते हुए घबराता था, नाउ दे जस्ट सिट कंफर्टेबली, गेट द होल ट्रीटमेंट डन, एंड कोई मसला, कोई मुश्किल नहीं होती है. सो यू नीड अ होल टीम, starting from from lobby to receptionist to assistant to doctor. Perfect, ma'am. Perfect. That's such a beautiful answer. Ma'am, because you're a female and learning, अब हमें अंडरग्रेड में प्राइवेट प्रैक्टिस मैनेजमेंट उस तरह से नहीं सिखाई जाती, ठीक है, हमें प्रैक्टिस मैनेजमेंट नहीं आती. आप यूर रनिंग सच ए ह्यूज कॉर्पोरेट डेंटल प्रैक्टिस. आपने ऑब्वियसली आपको भी पहले दिनों में पहले 2-3 सालों में तो नहीं आती होगी, आपने भी सीखी होगी ओवर द इयर्स. आपने अपने एक्सपीरियंस से अगर आपने 3 या 5 चीज़ें आप कोई यंगर जनरेशन को बताना चाहें कि ये चीज़ें प्रैक्टिस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो क्या चीज़ें होंगी? वो क्या चीज़ें होंगी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए that you are opening up a practice and
your job, and you are going to be ethical in your practice also. This is one element, one thing which हर जगह ब्रीच होती है, मगर यहाँ पर काफी ज्यादा हमारा कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ओवरऑल ही नहीं है, एक पूरी नेशन के देखा जाए तो, इंक्लूडिंग मी, आई एम पार्ट ऑफ दिस नेशन टू। लेकिन ये है कि वन कैन ऑलवेज लर्न, ठीक है ना। तो इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, अपनी टीम को अपनी फैमिली की तरह समझे, नॉट लाइक कि बस वो चूंकि आप डॉक्टर हैं, यू आर द सीईओ और यू आर द डायरेक्टर एंड व्हाटएवर, you can say anything, you can do anything, they should feel, they should respect you, they should love you, they should put their efforts to make your practice successful. And how would they do that? If you treat them well, if you give them respect also. This is one thing I have learned living in West, that even the maid used to come to my house to clean my house. She used to come in her car. She used to take lunch break. She used to take coffee breaks. She used to take smoking break. So, and it is, all these things were acceptable to me. वो अपना टाइम लेती थी, 9 बजे आई है, 5 बजे तक उसने काम करना है, इसमें वो अपना, और मेरे साथ टेबल पे बैठ के वो मैं उसको ऑफर करती थी लंच टाइम पे कि कम एना have lunch with me, and she used to sit down with me and have lunch. Why can't we do that here? ठीक है, हम उनको लंच टेबल पे साथ नहीं बिठा सकते, क्योंकि हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर डिफरेंट होता है, उसको थोड़े से उसके नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, मगर हम उनको रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं ना, हम उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं। सो यकीन माने कि मेरे ऑफिस में इन डेंटल प्रोफेशनल्स, I don't say कि these are my employees. I call them, this is dental professionals team. ठीक है। और इसी तरह अभी जब हमारा बहुत डिफिकल्ट टाइम आया कोविड में, जब 4-5 महीने के लिए ऑफिस भी क्लोज हो गया, कि हमने किसी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया, हमने किसी एम्प्लॉय को, और उसको जितना उनका कर सकते थे ड्यूरिंग दोस 4-5 मंथ्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वी वर एबल टू डू समथिंग फॉर देम। एंड वंस वी ओपनड अप, दे ऑल केम एंड दे जस्ट लव्ड अस, एंड दे सेड कि नहीं, हमने उनको इतनी ऑफर किया कि अगर आपको कोई भी जॉब मिल रही हो during this time, as you guys are not working, the office is closed, so please feel free and do it. जब ऑफिस एक दफा खुल जाएगा, we will definitely ask you if you want to continue your new job, so fine, but if you want to come back, so we will welcome you. And they said, there is no way we will leave you, we are going to be with you. So when you get this kind of care, then this is a very basic ingredient, which brings success to you. And then other thing is, believe in Allah, have faith. जो कई दफा सिंगल जो ऑफिस डेंटिस्ट ऑफिस होते हैं जिसमें एक ही डेंटिस्ट है, उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस नहीं है, वो रेफर नहीं करते हैं पेशेंट को। यहाँ पर मैंने ये भी एक चीज देखी है, वो शायद घबराते हैं कि पेशेंट दोबारा नहीं आएगा, ये क्या है। तो बच्चे, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, जो अल्लाह ने रिस्क देना है ना, वो देना है। तो आपको ये होना चाहिए कि एक पेशेंट आपको फुल पेमेंट कर रहा है, कि क्या मैं उसको उतनी अच्छी केयर और मेरा ट्रीटमेंट का लेवल क्या वही है उसके लिए। इसीलिए हमने यहाँ पर भी जब ऑफिस शुरू किया, तो दैट्स व्हाई we invited every specialty in this office, so that like मैंने रूट कैनाल्स में मेरा है, मेरे कॉलीग हैं जो कि पेरियो में he had his training, then one oral surgeon, then orthodontist, so then periodontist. So we, mashallah, have all these specialties under one roof. So if I see my patient and उनके बच्चों ने आना होता है, तो I refer their बच्चे to doctor, I don't know, who is a periodontist in my office. तो मैं ये नहीं कहती कि मैं इनको खुद ही कर लूँ, मुझे पता है कि they are here, so they should get the best care, So ये आप लोगों में भी, बाकी लोगों में भी होना चाहिए। और अगर हमारे ऑफिस में, मैं आपको बताऊं कि लोग रेफर करते हैं पेशेंट, कोई ऐसा डिफिकल्ट केस आ जाता है इम्प्लांट्स का, या किसी का कोई रूट कैनाल ऐसी डिफिकल्ट, तो पीपल डू, सम few of them, they do refer them. And once I complete that patient, or my other colleague, that particular patient जिसके लिए वो patient आया था, वो treatment, तो हम उसे कहते हैं कि now you can go back to your original dentist, because we are done with this procedure. So this is how it should be. Yes, that is a very brilliant concept, and honestly बहुत बहुत कम क्या, I don't even know a single clinic
who might be running on this, like perfectly running on this concept. So that's amazing, ma'am. That's a brilliant way to be running your practice. फीमेल्स के लिए मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा, बिकॉज फीमेल्स हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, ठीक है? आप यंग फीमेल्स को क्या एडवाइस देंगी कि उनको किस तरह जाना चाहिए अबाउट परसुइंग देयर करियर, बिकॉज नाउ almost 80% at least want to pursue a career, and they want to pursue dentistry, they want to go for either post grad or something like that. तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी that how can they fulfill their other responsibilities and pursue a career as well? हाँ, देखिए बेटा, मैंने आपसे पहले कहा ना कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट आई बिकेम अ डेंटिस्ट। लेकिन जब मैं बन गई और जब मैंने ये चूज किया और फिर मैंने इस करियर को परस्यू किया, और जब मेरे साथ वो एक अनटाइमली डेथ ऑफ माय हस्बैंड हैपेंड, यू नो, देन आई गॉट माय आंसर कि इफ आई वुड हैव बीन इन मेडिसिन तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था अपना वो करियर परस्यू करना, रातों को उठ के जाना। आपको पता है कि वहां पर जो ये ट्रेनिंग होती है 3 इयर्स की, वो Yeah. बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। दिन Yeah. रात 3-3 दिन तक घर नहीं आ पा सकते। तो मेरे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। माय यंगेस्ट वन वाज ओनली 1 year old, 1.5 years old. Oh. सो मेरे लिए अल्लाह ने डिसाइड किया, मैं कहूंगी। हालांकि एट दैट टाइम आई थॉट कि मे बी आई शुड गो टू मेडिसिन, यू नो, मेरा हमेशा इसमें वो पैशन रहा है। लेकिन और मेडिसिन डेंटिस्ट्री में मैं कहूंगी लड़कियों के लिए बहुत परफेक्ट है, लड़कों के लिए भी ऑफ कोर्स, बट लड़कियों के लिए कंसिडरिंग व्हाट यू सेड कि दे हैव अ फैमिली लाइफ आल्सो, दे हैव टू सी किड्स टू, यू नो। डेंटिस्ट्री में क्या है कि देयर इज नो लाइफ थ्रेटनिंग, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। इसमें आप अपना 5 days you want to work, you want to work 4 days, you want to work full time, part time, it's on entirely up to you. So you choose, you know, your timings. So this is the biggest thing for the girls. So girls को मेरा मतलब एक तो डॉक्टर भी बन गई, अपनी वो हेल्प भी कर रही है माशरे के अंदर, यू नो। एक डॉक्टर बनने का शौक होता है कि आई वांट टू हेल्प पीपल आल्सो, आई वांट टू हैव डॉक्टर विद माय नेम टू, you know. So and plus you are working also, you are not fully committed to your profession and you are not missing on your family too. So this is, you know, girls, you know, वैसे भी आप देखें कि मैं अब जब देखती हूँ हमारे जमाने में, I think we were like 10 or 11 girls in the class and the rest were all boys. And it has been changed totally, you know. बिल्कुल So उल्टा हो गया, like we were 10 10, boys and 40 yeah, girls. we were 10 बिल्कुल boys and उल्टा हो 60 गया ये। girls, yeah. तो ये तो है, हाँ yes, बिल्कुल, ये तो हर है. मैं इसमें I'm not in, लेकिन मुझे I'm not in, honestly speaking, you know, I think there should be some criteria, some merit where the class should be 50-50, you know, 50% girls and 50% boys. इट्स वन थिंग टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस एंड बिल्ड अ प्रैक्टिस, ठीक है? फिर एक चीज़ है कि उस प्रैक्टिस को शहर की सबसे बड़ी प्रैक्टिस बना दे, जिसका पूरे लाहौर को पता हो माशाल्लाह से, या हर डेंटिस्ट को तो Yeah. ज़रूर पता हो. तो वॉज दैट अ कॉन्शियस एफर्ट कि आप चाहती थी कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो लाहौर की सबसे बड़ी प्रैक्टिस बने, कि ये ओवर टाइम खुद ब खुद हो गया आपके प्रोसेस से, कि आपने जो मेहनत की उससे ये इतनी बड़ी प्रैक्टिस बन गई, या कि आप चाहती थी, शुरू से आपका गोल था कि ये इतनी बड़ी प्रैक्टिस बने? मेरा गोल था, मैं आई विल बी ऑनेस्ट सेइंग दैट, कि जब मैं यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर रही थी, व्हेन वी पिक दिस प्लेस एंड वी वांटेड लाइक a big multi-specialty practice, you know. So this is a total whole new concept in Pakistan, because in Pakistan, I think Rahman and Rahman at that time, they were the only, or maybe the Qazis, you know, good जिनको practices को मैं कहूँगी कि they were like on a bigger level, you know, they were operating. But in those places, even I don't know, I never worked in those places, but overall in Pakistan there was not a concept of multi-specialty practices where all the specialists, you know, work under one roof, you know, and they provide all kind of. I used to have one practice, I used to work there in New Jersey, and my practice was like multidisciplinary, multi-specialty practice, where our oral surgeon and our orthodontist used to come for 3 days a week, and then two of us, you know, me and another general dentist, you know, he was the periodontist also, my work was in endodontics. So we used to take care of the general patients, but as far as the extractions, wisdom teeth, implants were concerned, and orthodontic treatment was concerned, you know, वो हम उनके लिए अपॉइंटमेंट्स बिल करते जाते थे, और वो 3 days a week आते थे और वो अपनी पेशेंट्स देखते थे. तो आई थॉट कि इधर भी ऐसे ही होना चाहिए. तो जब मैंने स्टार्ट करना था, तो यस, इट वाज इन माय माइंड.
कि ये मुझे ये नहीं पता कि बड़ी प्रैक्टिस बन जाती, बट मुझे ये पता था कि मुझे ये बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें जो पेशेंट केयर है उसको, ये शुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, and doctors should provide state of the art treatment. This is what I wanted. Yes. Okay, perfect, ma'am. That's a very brilliant answer. Ma'am, हम as a dental community जो हैं, चलिए इसका तो आपने जवाब दे दिया. We can move on from that. एक question जो मेरे दिमाग में during the interview आया था और मैंने लिखा था, ma'am, do you regret coming back to Pakistan or do you not? I don't. You don't. I don't. Alhamdulillah. I don't. Yeah. I don't. There are multiple reasons. ठीक है, कुछ पर्सनल रीजंस है. मैं मुख्तसरन शॉर्ट बताऊं आपको कि my kids, they were very upset because they were very little and they said, Mom, why you brought us to your country? Why you brought us to your country? Because and I said, this is your country too. This is your country also. Give me 1 year. Honestly, give me 1 year. And then if you don't like it, I'll take you back. So this is how, and after 3 years, when they were here, they thanked me. Imam, thank you so much for bringing us back here. Because now we know where we belong to, who we are, And mashallah, say I have 3 children, 2 daughters and 1 son. And they're all grown up, mashallah, now. And they are doing great. Academically, mashallah, bache. My eldest one, she's a gold medalist from LUMS Law kiya usne. And then she did her LLM from LLM kiya Harvard Law School se. Oh, wow. And she's doing her PhD from Oxford now. Oh, and my son in the middle, he has done international economics mein usne undergrad kiya, George Washington University se, Washington DC se. And now he finished 2 years ago his JD, doctorate in jurisprudence. And he's pursuing his career as a lawyer in Chicago. And my youngest one, she's a science student. I wanted her to be a dentist. She would have been a great dentist, but she didn't listen to me. But anyways, she did her undergrad from University of Virginia with biology master. Uska major tha. And then she did immunology, master's in immunology from Germany. And she did her research in Oxford also. And she's working at present in Harvard as a research associate in the public health school of Harvard University. Oh, so mashallah say, my wow, that Harvard major public health school. Harvard ma'am, it's the second best in the world. So that's a very big deal. So alhamdulillah, bache, alhamdulillah, Allah really, really, it really worked for me, I would say, हालांकि हमारे जो initially एक मेरे colleague जो आए थे पाकिस्तान, he had to go back because उनके बच्चे could not settle down here. So उनको वापस जाना पड़ा. And then, other people joined us. So we are still 5, partners here. लेकिन उनमें से 2 चले गए, Canada चले गए हमारे orthodontist. तो वो Dr. Tariq joined us as he's my partner now as an orthodontist. And Dr. जो है Dr. Abid Sayyed, he left. And now we have now 5 of us, working here as a team here. But 2 of my colleagues, they had to go back. But I would say that my decision, my sacrifice, Allah ने मुझे इतना रिवॉर्ड किया है, इतना मुझे रिवॉर्ड किया है कि मैं अल्लाह से गिला भी नहीं करती हूँ. मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह has been given me so much, बच्चे माशाल्लाह अब यही है कि वो चूंकि बाहर चले गए तो आते जाते रहते थे छुट्टियों में, समर में, विंटर में, इधर उनकी छुट्टी होती थी, इधर उनको वापस बुला लेती थी. So they stay connected to their home also. ये ना हो कि वो अकेले रहने के आदी हो जाए और वो अमेरिकन ही होके पूरे रह जाए. तो ये मेरा, तो मैं हमेशा इधर मई में उनकी समर वेकेशन होती थी, 20 को छुट्टी हुई है तो 22 को वो लाहौर में होते थे. मेरा छोटा भाई, my younger brother lives in Chicago and he works there. तो मेरी अम्मी भी सेम ऐसे ही है कि बस ये अमेरिकी ना हो जाए, उसको जैसी समर ब्रेक होती है उसको वापस बुलाती है, विंटर ब्रेक होती है उसको वापस बुलाती हैं. तो अच्छी बात ये है ना डॉक्टर प्राचा कि now they can settle anywhere. If they want to come back to their country and they pursue their careers here, they can do that. And if they want to stay there, so they are fully equipped for that also. So absolutely, that is a beautiful journey. आपने मुझसे क्वेश्चन किया था फीमेल डेंटिस्ट के बारे में, उसका मैंने मेरा ख्याल है आपको आंसर नहीं किया. हाँ, पूरा नहीं हुआ था वो क्योंकि बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप हाँ जी प्लीज यू कैन कंटिन्यू. हाँ जी, ऑर्थोपेडिकल, हाँ वो मैं उसके बारे में ये कहना चाह रही थी कि देखो
when it comes to a profession ना, तो उसमें don't bind it to don't make it a gender specific, you know, कि ये female ये male, ठीक है. Although the culture society here पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही है. मैं भी जब आई हूँ तो मुझे भी, चूंकि मैं ऑलमोस्ट 15 years अमेरिका रही थी, तो मेरे लिए भी एक कल्चरल थोड़ा सा मेरे लिए भी था, क्योंकि 15 साल में बहुत सारी चीजें इंसान वो फॉर ग्रांटेड लेता, बस पता होता है कि बस मैं, लेकिन यहाँ पर आके मैं वो चीजें नहीं कर सकती थी. मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता था, like traveling alone. My brothers told me, you know, not to do that, you know, even if you are with the driver. So कुछ चीजें होती थी जो आपको उस कल्चर के मुताबिक देखनी पड़ती. लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगी कि अब तो हमारा माशरा भी थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है. अब यहाँ पर भी गर्ल्स एजुकेशन एंड गर्ल्स का वर्क करना, मेरा मतलब है इट्स अ नॉर्म नाउ, यू नो. लड़कियां, और मेरा ख्याल है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, ये मैकडॉनल्ड्स हो गया या और सारी इस तरह, इन्होंने भी हेल्प की है इस चीज को इवॉल्व करने में, कि लड़कियां निकली हैं बाहर और इसमें एक्सेप्टेंस आई है. ये एक्सेप्टेंस पहले नहीं थी, ठीक है ना. ये एक्सेप्टेंस अब आई है. अब मैं कहती हूँ, लड़कियां हो या लड़के हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ वट यू आर लर्निंग, वट यू आर डूइंग. यू शुड नो हाउ टू एक्ट, यू शुड एक्ट प्रोफेशनल, और बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो. किसी भी फील्ड में, मैं यहाँ पर बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो कि जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, एंड दे आर डूइंग इट, यू नो, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसेस दे आर हैविंग. सो कोई आपको जेंडर जो है ना, इट डज नॉट स्टॉप यू from having a successful business in any field, any profession. So अपने आप को यहाँ पर आपने लिमिट नहीं करना. Feel confident and go for it. Perfect, ma'am. That is amazing. मैम, we'll wrap this up. हमारे एंड के 2-3 सवाल पूछूंगा आपसे. मैम, आप एक बहुत जी जी. एक्सपीरियंस डेंटिस्ट है, आपने इतनी बड़ी प्रैक्टिस अब बना ली है. आप अगले 10 साल में कहाँ देखती हैं अपने अपने आप को पर्सनली, दैट वे डू यू सी योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ गोइंग फ्रॉम हियर, क्योंकि अब प्रैक्टिस को और कितना आप बढ़ाएंगी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ गोइंग इन द नेक्स्ट 5 to 10 years? I just want to know that. मेरा तो ख्याल है, but I think I still have room for दैट इज, more. ये वाला माइंडसेट हो तो ठीक है. फिर ही ग्रोथ आती है. यस मैम, डेफिनेटली. देखिए उसमें इसमें क्या है, मे बी, यू नो, in the next after, you know, next 5 years, I'm thinking I will be working for like 4 to 5 days myself, although I have associates now, you know, I have developed. I'm thinking, मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको मौका देना चाहिए. I have मेरा, चूंकि हमारे ये दो जो मेरे कॉलीग्स हैं, one is from CMH and one is from Fatima Memorial, तो उनके जो ग्रेजुएट्स आके ऑब्जर्वरशिप करना चाहते हैं, I fully endorse them. I said कि yes, you should come and you should observe, you know. आके उनको डेज डिवाइड कर देते हैं उनके, they come and observe it. और डेंटिस्ट्री में ये है कि we are surgeons, you know, we are not doctors जिसने के प्रिस्क्रिप्शन लिखना है और मेडिसिन लेनी है. We are surgeons. So हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. मुझे अब तो खैर बेहतर है, मैं कहूँगी कुछ कॉलेजेस में अभी भी, लेकिन अभी भी बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हैं. हमारा अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि मुझे जो फर्क महसूस हुआ यहाँ की डेंटिस्ट्री में और वहाँ की डेंटिस्ट्री में, जो मैं चाहूंगी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर वो कुछ चीजें तो अब मैं देख रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इंडक्ट हो रही है, और कुछ मैं और चीजें चाहूंगी कि आए. अगर कोई मेरे से पूछता है, जिस तरह मेरे कॉलीग्स हैं जो यहाँ पर हैं, वो तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि यू शुड, यू नो, लाइक एवरी सब्जेक्ट, जैसे डेंटल हमारे सब्जेक्ट है, प्रोस्टोडोंटिक्स हो गया, एंडोडोंटिक्स हो गया, मेरा मतलब पीरियोडोंटिक्स, हमारे इन सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स के साथ साथ इनके लैब मैनुअल्स हैं, इनके क्लिनिकल मैनुअल्स हैं. एक एक चीज का, एक एक प्रोसीजर का बताया हुआ है कि ये किस तरह करना है. लाइक फॉर एग्जांपल रूट केनाल है, अगर एंडो का जो मैनुअल है उसमें सिंगल रूटेड टूथ कहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक मैक्सिलरी टूथ के अंदर where you should look for the canals, how you should go and, you know, go there, which bar you should be using, how you are going to, मेरा मतलब clear the canals and all that. एक एक चीज मैनुअल के ऊपर ना स्टेप वाइज 1 2 3 4 करके लिखी हुई है. और जो जो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ आए हैं observership के लिए, and then few of them joined me as my associate also, I gave those manuals to them. I told them to go through, use those bars, and एक एक चीज लिख. और कहीं पर
if you have any problem, I'm here to help you also. Take a tooth. You can buy typodont, you can work on plastic teeth also. But एक ह्यूमन टूथ जो होता है, एक नेचुरल टूथ की ना अपनी एक रेजिस्टेंस थिकनेस होती है. यू शुड गेट दैट फील बिफोर यू एक्चुअली वर्क ऑन इन अ माउथ. ठीक है, तो वो मैंने कहती थी कि आप एक्सट्रैक्टेड टीथ लेकर आए और आप उनको माउंट करें और मुझे आप शुरू करें. आई टेल यू हाउ टू डू इट और मल्टीपल टाइम्स करो जितना आपका हाथ साफ होता जाएगा. वन डे व्हेन आई फील कॉन्फिडेंट कि यस यू कैन डू इट, तो यू विल हैव पेशेंट टू वर्क ऑन इट आल्सो. सो ये करना चाहिए हमें. जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हमारे, एक तो हमारे स्कूल्स के अंदर भी मॉड्यूलर सिस्टम को हो जाना चाहिए. अब मॉड्यूलर सिस्टम में ये होता है कि उसमें जिस फाइनल ईयर में मेरे पास अपना एक क्यूबिकल था जिसमें मेरे पेशेंट स्केड्यूल होते थे. और उसके बाद में वो सिर्फ ये नहीं कि वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं थे कि ये मैंने पेरियो डिपार्टमेंट में 2 महीने करना है, फिर मैंने प्रोस्तो में जाके 2 महीने करना है, फिर मैंने एक्सट्रैक्शन करनी है. आपके पास जो पेशेंट आता है इस तरह नहीं आता. सो यू आर नॉट लर्निंग how to handle a practice. You are just learning a procedure, maybe repeat करके बार बार, but आपको वो confidence नहीं आता, आपको पता नहीं चलता कि आपका sequence of treatment क्या होना चाहिए. ठीक है, but if you are working in a modular system जिसमें patient एक आया क्योंकि कोई toothache के साथ उसको root canal चाहिए तो आया, कोई extraction के लिए आया, किसी को perio problem है, किसी का कुछ है मसला, तो वो आप जब you see every kind of patient before you actually jump into the real world and jump into your own practice. For the whole 1 year, I was seeing patient in my cubicle, जिसमें कि all kind of treatment procedures जो थे वो मैंने किए. So once you graduate, you know that to some extent, yes, I can handle these things. हाँ, कोई difficult case आ जाता है, तो जैसे वहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि I used to refer a difficult root canal जब मैं इतनी confident नहीं थी. Wisdom tooth मैंने नहीं निकालना because it has its own scenarios. So refer it to an oral surgeon. This is how we've been trained. This is how I would like my fellow men to be trained here also. तो बाकी देखो सब सीखेंगे भी, काम भी करेंगे, रिस्क भी आएगा और आपको ना एक इनर फुलफिलमेंट फील होएगी, एक सेटिस्फैक्शन फील होएगी कि मैंने अब कुछ अच्छा किया. And that feeling is very important. Yeah. Yes, ma'am. Beautiful answer. मैम, आखिरी 2 सवाल पूछूंगा. आखिरी सवाल तो ये है कि एक यंग डेंटिस्ट को आप अगर एक लाइन में आपने कोई एडवाइस देनी हो, तो आप एक यंग डेंटिस्ट जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, एक लाइन में आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए एक यंग डेंटिस्ट का? एक लाइन में बड़ा मुश्किल है. अच्छा, चलिए 2-3 लाइनें ले लें. ठीक है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस. ठीक है, और हैविंग फेथ इन योर हार्ट दैट यू वर्कड हार्ड, you spent all those years in learning, and now you are going to provide care. Now you are going to provide the best treatment possible, best skills you have learned over a period of time. ठीक है, मेरा ख्याल है ये सबसे. और then having faith in your heart that your risk will come to you. कोई कहीं नहीं जाता है. तो बेसिकली अपनी जात के ऊपर कॉन्फिडेंस, अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने दिल के अंदर एक ईमान कि इंशाल्लाह आई विल डू बेटर. इंशाल्लाह जब आप ये कह के चलते हो ना, तो मेरा ख्याल है आपका रास्ता जो है वो आसान होता जाता है. Perfect, ma'am. Beautiful answer. Ma'am, last question. What do you think about this platform, this startup of ours, and any suggestions or advice that you would like to give us कि हम किस तरह बेहतर हो सकें dental talk को? First of all, I should congratulate you to start it and you pursue it and you are doing these interviews. You are doing a great, I think, job for our profession. Thank you so These much. kind of this kind of talk not only bring us together, but we learn from each other also. Yes, and that is very important. That we should teach our youngsters. And this is a very unprecedented effort. I would say on your part. Thank you so and much. wish you all the best. And the internet कहते हैं ना कि internet is the great equalizer. तो बिल्कुल सही है. अब जिन स्टूडेंट्स को फर्ज करो उनको किसी अच्छे फर्ज करें उनको चैटबॉट ट्रेनिंग में कहीं कमी रह गई है. एक तो गूगल ने कुछ चीजें आसान कर दी हैं. You can go and you can see those procedures. And दूसरा, this kind of talk, come forward. Have whatever questions you have in your mind, just ask them.
ठीक है, feel free. Never think that ये ना हो कि क्वेश्चन बहुत स्टूपिड सा हो, तुम क्या सोचेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है. आप बिलीव करो, मैं यहाँ पर अभी इस उम्र में भी इतने एक्सपीरियंस के बाद, मेरा कोई 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अभी भी when I see sometimes a patient and I think I should consult with another person, I go to my other colleague and I said, okay, this is what I see in patient, and I'm little doubtful, whether this or that. I don't feel shy. I don't feel, what do you say, कि मैं क्यों पूछने जाऊं, या वो दूसरा डॉक्टर क्या सोचेगा कि why is she asking, why she doesn't know this thing. No such thing. There's nothing wrong. There's nothing wrong to ask another person, who is equally qualified. They know, yeah, we are all here, our backgrounds क्या है, हमारे experience का level क्या है, but we still ask. So क्या आपका क्वेश्चन था? मैं लंबी बात कर गई और मैं उसमें, हाँ, ये इंटरनेट का मैं, अब तो हमारे जमाने में बेटा, तो ना तो डेंटिस्ट्री में बुक्स अवेलेबल होती थी, ना यहाँ पर कोई इंटरनेट था, ना हमें कोई, हम तो तरसते होते थे, हमें किसी बुक का पता चल जाता था, हम उसकी फोटो कॉपीज करा करा के, और पता नहीं, बेसिकली हमारा, वी यूज्ड टू रिलाई मोर ऑन द लेक्चर्स, जो हमारे टीचर हमें आके देते थे उस वक्त. लेकिन अच्छे थे, उन्होंने मेहनत की हमारे ऊपर, हमने बेसिक तो यहीं पर सीखा. वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट के इस मुल्क ने हमें बनाया डॉक्टर, कि आई वाज एबल टू गो देयर and I could start from from NYU and I did my DDS from there. तो बेसिक तो हमें इस मुल्क से मिली ना हमारी डिग्री, तो ठीक है, हमने उधर जाके थोड़ा सा, क्योंकि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे हैं, एंड आई विश कि मैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर बेहतर हो गए हैं. And if I could be of any help, मैं हमेशा अपने colleagues को भी कहती हूँ, if I could be of any help on the clinical side, academically, because I have never pursued my career in academics, so I don't know. Although I know I would be a very good teacher, but clinical side पे, yes, I could still help, if somebody needs any or wants anything, from me. I'm always ready. Perfect, ma'am. Thank you so much, ma'am. Honestly, when I was coming into this interview, I knew कि अच्छा होगा, but I did not know कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा इंटरव्यू में. I am so glad कि मैं आपको पिछले 2-3 महीने फोर्स करता रहा कि मैम इंटरव्यू करना है. So I am so glad. मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको फोर्स किया, because this conversation was very very nice, and I'm sure so many people जो भी ये सुनेगा, they will learn so much of this. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank Thank you. Great. Okay.